हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स एंड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री वाला चैनल में रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो तक हमने पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट सिस्टम पढ़े हैं, बेसिकली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग हमने बात की, पर्टिकुलर ट्राइबल सिस्टम की, कॉमन सिस्टम की और डिराइव सिस्टम की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जस्ट IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. Before starting the just nomenclature, we'll take just some of the structure as a just organic chemistry or organic compound. Organic compound के structures के बारे में discuss करना चाहेंगे. So first of all, we'll go with the just different structures of organic compound या organic compounds. This is the organic compounds. If we'll go with the different structure of the organic compounds, then there are following kinds of the structure of the organic compounds. Following. First is you can say just isolated structure. Second is your condensed structure. If we go with the third, then that is called as bond line structure. Number 4 is your two-dimensional structure, and number 5 is your three-dimensional structure. We'll take a lot of practice regarding to these. First of all, we'll go with just these kinds of the formulae. For this, we'll take example as a 2-chloro. This is the 2-chloro-butane. Here's the structure. If we'll go with the but, means there are 4 carbon atom like this C. Over the number 2 position there is chloro. Rest on balancing. This is the CS3, CH, CS2. This is the CS3. If we'll go with the first formula, that is the isolated formula, then it will be written as follows. As we all know, the valency of carbon is 4. So this is the 1, 2, 3 and 4. Here is the 3 hydrogen. 1, 2, 3 hydrogen. Here is the 2 hydrogen. 1, 2 hydrogen. Here is the H and Cl. And here is the 3 hydrogen. 1, 2 and 3. This type of the structure is called as isolated structure. This is the isolated structure. If we'll go with the next, that is the condensed formula. Condensed formula को के लिए पर्टिकुलर कंपाउंड को चारों तरफ से कंप्रेस मान लेते हैं. In that case, this is the second formula is your condensed formula. This is the condensed formula. Regarding to this, just it will be taken either this form. This is the CS3. This is the CHCl. This is the CS2. And this is the CS3. This is the common form of the compound. और अगर इसको चारों तरफ से compress करेंगे, then its structure will be CS3. This is the CHCl. This is the CS2 and CS3. This is called as condensed formula. Now the time to discuss about the just bond line structure. Bond line structure के लिए आपके पास में सबसे पहले आपको कार्बन काउंट करने पड़ेंगे. So this is the 1, 2, 3, 4 carbon atom. We can take these 4 carbon atom as follows, either 1, 2, 3 and 4, or you can take just as follows 1, 2, 3 and 4. These are the 4 carbon atom. Over the number 2 position there is Cl. So you can write here over the here Cl, or you can write here Cl. This is the just
bond line structure. So this is about bond line structure. This is the bond line structure. This was about the bond line structure. Now if we'll go with the just 2D structure, then first of all we'll go with the structure like this. This shows x direction, this shows y direction. First of all we'll go with the just chiral carbon. Chiral carbon means एक ऐसा कार्बन एटम आपको ढूंढना है जिसमें पर्टिकुलर अटैच सारे ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो. तो उस पोजीशन में आपके पास में ये वाला कार्बन एटम एक chiral कार्बन एटम की तरह काम करता है. दिस इज द chiral कार्बन एटम. बिकॉज ऑफ इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है. एक H अटैच है, एक Cl अटैच है, एक CH3 है और एक C2H5 है. इसको आप कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे. तो इस कार्बन को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया सेंटर पे. पर्टिकुलर चेन का नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 एंड 4. जहां से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसको नंबर 1 कार्बन को यहाँ रख दीजिए. तो उस पोजीशन में आपके पास में यहाँ CH3 होगा. एंडिंग कहाँ हो रही है, इन दोनों पर C2H5 पर, तो आपको यहाँ पर C2H5 रख देना है. और पर्टिकुलर मैं बात करूं तो इस सेंटर वाले कार्बन पे एक तो H है और एक Cl है. तो या तो आप H को इधर रख दें, Cl को इधर रख दें, या Cl को इधर और H को इधर भी रख सकते हैं. तो उस पोजीशन में ये वाला फार्मूला आपके पास में 2 डायमेंशनल फार्मूले के रूप में काउंट होता है. 2D फार्मूला, 2D फार्मूला के रूप में काउंट होता है. फिर अगर बात करें हम पर्टिकुलर 3D की, जिसको हम फ्लाइंग वेज फार्मूला भी कहते हैं. दिस इज द 3D फार्मूला. 3D formula. It is also called as flying wedge formula. Flying wedge formula. If we will go with this formula, then first of all we'll take just like these two single bonds. After then it will be use of a solid line like this. This is the solid line. Here will ascending order of a dotted line like this. ये वाला जो आपके पास में सेंटर पोजीशन है, ये इसको हम chiral कार्बन को यूज करेंगे, ये वाला. अब पर्टिकुलर इस कार्बन से अटैच ग्रुप्स को हम डिफाइन करें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके पास में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है. तो क्लोरीन को आप सॉलिड लाइन पे रखेंगे Cl. जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए कम है, उसको आप डॉटेड लाइन पे रखेंगे. बाकी रिमेनिंग दो ग्रुप, एक CH3 और एक C2H5 कहीं भी रख सकते हैं. CH3 यहाँ तो C2H5 यहाँ, यहाँ CH3 तो यहाँ पे C2H5. तो पर्टिकुलर आप इसको कुछ इस प्रकार से रख देंगे. दिस इज द CH3 और ये आ गया आपके पास में C2H5. ये था पर्टिकुलर आपके पास में 3 डायमेंशनल और फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर. ये था आपके पास में प्रैक्टिस रिगार्डिंग टू दिस 5 फॉर्मूला. First is your isolated, second is your condensed, third is your bond line, fourth is your 2D, fifth is your just 3D. So we can take them as a important also. This is the star as a isolated, this is the condensed, this is the bond line, this is the 2D structure, and this is the 3D structure. These are the important structure of the organic compound. Now the time to discuss about the important fourth system, that is your IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. If I'll go with the just ancient time, पुराने टाइम की बात करूं तो IUPAC को IUC के नाम से जाना जाता था. IUC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिकल कांग्रेस, जिसको बाद में पर्टिकुलर चेंज करके IUPAC कहा गया. इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में हुई. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज जिनेवा सिस्टम. सो वी विल गो
with the IUPAC system. This is the fourth system and important system that is called as IUPAC system. IUPAC system. It is also called as Geneva system. Geneva system. Full form of the IUPAC is your International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry is the full form of IUPAC or Geneva system. If we'll go with the nomenclature, then first of all it will use of following tables. This is the following tables will be used. Following tables. First table is your A table. Here it is for the number of कार्बन एटम. ये कार्बन एटम की नंबर के लिए है. Here is the number of carbon atom. Here is the prefix. Like हिंदू कल्चर कि कोई भी बेबी किस टाइम पे जन्म लेता है उसके बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट वर्ड निकाला जाता है, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सो ऑन, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है. वही यहाँ पे है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसके रिगार्डिंग. इफ देयर इज 1 कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is the 10 carbon. Then regarding to this, it will use of some of the prefix. For 1 carbon atom, it will be use of meet. For 2 carbon atom, it will be use of eat. For 3 carbon atom, it will be use of probe. For 4 carbon atom, it will be use of but. For 5 carbon atom, it will be use of pent. For 6 carbon atom, it will be use of hex. For 7 carbon atom, it will be use of heft. For 8 carbon atom, it will be use of OCT, oct. For 9 carbon, it will be use of non. And for 10 carbon, it will be use of dec. So it is called as meet, eat, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec. For 1 carbon atom, meet, eat, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec. This is the table number A. If we'll go with the table number B, this is the table B. Regarding to table B, if we'll go, then it is along with the just substituents. So this is for the substituents और substituents के regarding हम पढ़ चुके हैं. This is called as methyl. CH3 is called as methyl. Just CS2 CH3 or you can say C2H5 is known as ethyl. N-propyl, isopropyl, just N-butyl, isobutyl, so on. ये सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे आपके पास में. इसके अलावा बात करूं तो टेबल नंबर 3 के रिगार्डिंग, दिस इज द टेबल 3 और यू कैन से सी. टेबल सी के रिगार्डिंग बात करें तो ये था आपके पास में पर्टिकुलर फॉर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. फॉर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स उस कार्बन एटम में, उस कार्बन चेन में पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं. अगर आपके पास में वहां सब्स्टिट्यूएंट एक काउंट होता है तो आप उसको मोनो लिखते हैं, बट मोनो को जनरली शो करने की जरूरत नहीं होती है. फॉर द 2 सेम ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इट विल बी यूज ऑफ डाई. फॉर 3 सेम ग्रुप इट विल बी यूज ऑफ ट्राई. दिस इज द प्रीफिक्स and this is the number of substituent. So for the 4 it will be tetra, for the 5 it will be penta, for the 6 it will be hexa, for the 7 it will be hepta, for the 8 it will be octa, for the 9 it will be use of nona,
and for 10 it will be use of deca. These are for the number of substituents. Now I would like to go with the final table, that is the table number 4, or you can say table D. This is the table number D. This is for the substituent. If there is F, there is Cl, there is Br, there is I, there is NO2, there is your C6H5. Then these are known as, this is called as fluoro, this is called as chloro, this is called as bromo, this is called as iodo, this is called as nitro, and this is called as phenyl. These are the substituent regarding to just table number D. These 4 tables should be in your mind. Without learning these tables, you can't do the nomenclature. So be with me. I'll go with the just simplest system. So in the sequence, first of all, I would like to go with the nomenclature. In the nomenclature series, what compound will be here? I'm going to tell you. Because of it is required, first of all, which of the compound will be discussed by us or by me in this video or further, I have to explain. First of all, if we'll go with the IUPAC system, then regarding to IUPAC system or nomenclature system, we will go with the first, that is your alkane. After that, we'll go with the just second, alkene. After then, we'll go with the third, alkyne. After then, we'll go with the fourth, just your polyene. After then, I'll go with the polyine. After then, we'll go with the alkene. Alkene, you can say having only single bond, having at least one double bond, having just at least one triple bond. Polyene having more than one double bond as a polyene. Polyine having more than one triple bond, they are known as polyine. Alkaline having both double and triple bond, they are known as alkyne. After then, we'll go with the just function group. This is the functional group. We'll count it here. This is the, from the 7th, we'll go with the functional group. What is the meaning of functional group? We have discussed functional group, just atom or group of atom which gives specific physical and chemical properties. And in previous videos we have discussed about this definition. So first is your, as a 7th, it will be use of carboxylic acid. As a 8th, it will be use of COCl, oil chloride. For the 9th, it will be your CONS2 as a amide. This is 10 as a COOR as a ester. This is the 11, as we can take your COOCOR as an anhydride. If we'll go with the 12 function group, then we can take as a CHO. As a 13 function group, we can take just your CO as a ketone. As a 14 function group, we'll go with the CN. 15 function group, as a, we'll go with the just NC isocyanide. 16 is your, after then we'll go with the alcohol. 17 marking will be for the ether. 18 marking will be for the just thioalcohol. 19 marking will be for the SO3H. This is the sulfonic acid. 20 marking will be for just your NS2, 1 degree amine. NH
2-degree amine, and N as a 3-degree amine. So what are these? This is the carboxylic acid. This is the carboxylic acid. This is the oil chloride, or you can say acyl chloride. This is the amide. This is the ester. This is the anhydride. Anhydride. This is the aldehyde. Aldehyde. This is the ketone. This is the cyanide. This is the isocyanide. Isocyanide. This is the alcohol. This is the ether. This is the thioalcohol. Thioalcohol. This is the sulfonic acid. Sulfonic acid. This is for the 1-degree, 2-degree, and 3-degree amines. We have to discuss about these just as a important just function group and the substituents regarding to the nomenclature as a IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. So first of all, we'll go with the just your alkane nomenclature system as a alkane, and we'll go deeply and we'll take a lot of practice जो कि आपको काफी हेल्प करेगी. वीडियोस को यूं ही कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि बिना वीडियो के आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस में केवल गैस कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम. व्हाट इज दैट? एज अ alkane, nomenclature of alkane. This is the nomenclature of alkane. If you go with the just nomenclature of alkane, then these are the hydrocarbon, means alkanes are the hydrocarbon which exist only and only, just you can say single bond between carbon and carbon. So this is the nomenclature of alkane. You can say hydrocarbon. Which kind of the hydrocarbon? Means open chain hydrocarbon. Open chain hydrocarbon having only single bond between carbon and carbon. This is the definition which we have discussed in previous videos also. These are also called as just paraffins, having the formula CnH2n plus 2. This is the common formula. Common formula for the alkane will be your CnH2n plus 2, where n is equals to number of carbon atom, and we have discussed about the general representation. As a general representation, we can take two-way, one of the RH for lower alkane, and it will be R bond R. This is for the higher alkane. This was about the just representation. Now I would like to go with the nomenclature. First of all, we'll take the example, and here one of the important thing also I'll mention here. This is the suffix. For the suffix, as a suffix of alkane, it will be ane, as a suffix ane. This is the ane. Now I would like to go with the structures as a practice. So we can take first compound as a CH4. This is the second compound, CH3. This is the third compound, CH3, CH2. This is the fourth compound, CH3, CH2. This is the fifth compound. We can take over here CH3, CH2. This is the CH2 and CH3. After then, we can go with the complex chain as a sixth
This is the CS3, CH, and CS3. This is the sixth compound, as we can take CS3. This is the CH3 and CS2, Further, we can take just this one compound as a CS3, CCS3, CS3 and CS3. Further, we can take just your CS3. This is the CS3. This is the CS3 and this is the CH. Or you can take over here CCS3, CS3 and CS3. After then you can take the compound as follows: CS3, CH, this is the Cl and CS3. This is the 11th compound, CS3, CH, this is the Cl, CH2, CH3. This is the 12th compound, as we can take CS3, CH, this is the Cl, this is the CHBr, this is the CS3. This is the 13th compound. As a 13 compound, we can take just your CS3. This is the CS3, this is the Cl, this is the Cl, CS3 and CS3. We can take, this is the 14 compound as a CS3. This is the, we can take just bond line formula also. So regarding to it, we can take this one is structure. If we'll go with the 15 compound, then we can take as a following structure like this. So first of all, if we'll go with the nomenclature system, then we'll use two things. One of the is your two important thing. One of the is your LPCC, which means longest possible carbon chain. This is the carbon chain, and another is your LLR. This is called as lowest locant rule. These are the two important things regarding to the nomenclature of alkane. If I'll go with this, then here is the one carbon in the chain, so it will be use of meth. And as we know that the valence of carbon all are the single bond because of there are 4 hydrogen atoms, so it will be use of suffix ane. So the name of compound will be methane. For this it will be, there are 2 carbon atoms, so it will be eth. Suffix will be use of ane, ethane. If I'll go with the further, then here is 3 carbon atom. For the 3 carbon atom, it will be use of prop and single bond is present, that's why ane. Here is the 4 carbon atom in the chain, still longest possible chain. This will be your but and single bond ane. This is the 5 carbon atom, 1, 2, 3, 4 and 5 carbon atom. So here will be use of pent and single bond ane. But right now these are the complex structure. For the complex structure, it will be use of first of all LPCC. So longest possible carbon chain, this may be 1, 2, 3. You can take 1, 2, 3 also, 1, 2, 3 also. After then you have to count the chain LLR. आपको मेन चेन को सेलेक्ट करने के बाद में जो जितना भी आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट बच जाता है उसको उधर से काउंट करना, जैसे उसको लेस मार्किंग मिले. अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो नंबर 2 पे मिथाइल, इधर से काउंट किया तो नंबर 2 पे मिथाइल. पोजीशन दोनों तरफ से सेम है. इन दैट केस आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी काउंट कर लीजिए. नंबर 2 पे आपके पास में CH3 आ रहा है, देन यू विल कॉल इट 2 पर आ रहा है मिथाइल. CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल. देयर इज 3 कार्बन इन चेन, सो यू विल कॉल इट prop and single bond है तो ane. This is the nomenclature of the hydrocarbon. After then you will go with the just longest next compound. This is the longest possible chain. आप इस चेन में नहीं जाएंगे क्योंकि 3 कार्बन है. आप ये वाली चेन ले सकते हैं 4 कार्बन वाली. लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 4 कार्बन वाली होगी. काउंटिंग करेंगे तो इन दैट केस पर्टिकुलर आपके पास में दिस विल बी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि इधर से नंबर 2 पे आ रहा है, इधर से नंबर 3 पे आ रहा है. और LLR क्या करता है, उधर से काउंट करना है जैसे लेस मार्किंग मिले. सो दिस विल बी योर 2 methyl. There is 4 carbon in chain, so it will be but and single bond ane. If you will go with the further next compound, then you can take the longest possible chain. Longest possible chain इसमें particular 3 carbon से ज़्यादा नहीं होगी. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This is the 1, 2, 3. 3 carbon वाली possibility होगी. After then counting
काउंटिंग किया तो आपने नंबर 1 यहाँ कर दिया, नंबर 2, नंबर 3 सेम इधर से काउंट किया होता तो भी नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट आते। नंबर 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, सो दिस इज द वन फॉर द 1 मिथाइल, this is for the another methyl 2 2, so there are 2 methyl, so dimethyl. There is 3 carbon in the chain, so it will be prop and single bond hai, that's why in. Now the time to discuss about the ninth. This is the longest possible chain as a carbon chain. After then counting, so you will count from this side 1 2 3 and 4. अगर आपने यहाँ से काउंट किया तो नंबर 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, इधर से काउंट और 3 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, इधर से काउंट किया तो नंबर 2 पे 2 मिथाइल और 3 पे 2 मिथाइल, तो काउंटिंग सेम है, कहीं से भी काउंट कर लें। सो इट विल बी योर जस्ट 2 2, after then 3 3, there are 4 methyl, both are same, so you will use tetramethyl, there are 4 carbon in chain, so it will be but and single bond in the nomenclature of the carbon compound. If you go with this, then this is the Cl में कोई कार्बन नहीं होता, कहीं कंफ्यूज हो जाए, so this will be the chain counting 1 2 3, इधर से काउंट किया तो भी 2 पे क्लोरो आएगा, so the name of compound will be 2 chloro, there is 3 carbon in chain, so it will be prop and single bond है तो in. If you will go with this compound, then this is the longest possible chain. काउंटिंग किया आपने 1 2 3 4 कार्बन है, नंबर 2 पे क्लोरो आ रहा आपके पास में, so this will be 2 chloro, there are 4 carbon in chain, so but and single bond है इसलिए in कर दिया, this is the 2 chlorobutane. If we'll go with the further, then this is the longest possible chain. अब अगर आप काउंटिंग करते हैं तो इधर से काउंटिंग किया तो नंबर 2 पे क्लोरो आ रहा है, इधर से काउंटिंग किया तो नंबर 2 पे ब्रोमो आ रहा है। अल्फाबेटिकली ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से पहले आता है, so you will call it, just count it from this side, this will be your 2 bromo, this is your 3 chloro, and here is the 4 carbon atom, so but and in will be the suffix. Now the time to discuss about the next compound. इसको डिस्कस करें तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपके पास में ये होगी। काउंटिंग किया तो नंबर 1 2 पे क्लोरो मिथाइल, फ्रॉम दिस साइड नंबर 1 2 पे क्लोरो मिथाइल, सेम एनवायरमेंट है, कहीं से भी काउंट कर लीजिए, सो दिस विल बी योर 1 2 3 एंड 4। नंबर 2 पे आपके पास में क्लोरो का सी पहले आएगा, तो नंबर 2 पे एक क्लोरो है, नंबर 3 पे एक और क्लोरो है, सो इट विल बी 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 dichloro, there are just 2 methyl over the number 2 and 3, so you will call it, here will be hyphen, it's not dash, it's hyphen, without it will be use of just hyphen between one of the word and the one of the figure, and between two figure it will be use of just comma, so it will be used, the name of compound will be 2 3 dichloro, it will be 2 3 dimethyl, 2 3 dimethyl, this is the 2 3 dimethyl, and there are 4 carbon in the chain, so but and single bond, that's why suffix will be in. इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप इस टाइप के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज करें तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब कॉर्नर्स पे कार्बन को अज्यूम करना है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से कार्बन को अज्यूम कर लिया। कार्बन के लिए वैलेंसी आपके पास में 4 होती है, कहीं भी यहाँ पर सिंगल लाइन के ऊपर डबल लाइन नहीं है, मीन्स यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल लाइन नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होगा, मीन्स ऑल आर द जस्ट एल्केन। तो उस पोजीशन में इसको बैलेंस कर लें। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन पुट कर दें, यहाँ 1 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, सेम 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड सेम 3 हाइड्रोजन। Now the time to discuss about the counting. सबसे लंबी चेन, longest possible chain. So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. You can take any kind of the chain. So first of all, this is the counting. This is your 1 2 3 4 and 5. At number 3 position there is the C2H5, CS2CS3 ethyl. Over the number 3 position there is the ethyl. So you will call it 3 3 diethyl. 3 3 diethyl. Here is the 5 carbon pent and single bond in. If you will go with the final example, then you can use over here the carbon atom like this. Carbon, this is the carbon, this is the structure. After the valency, 3 hydrogen, this is the 2 hydrogen, this is the 3 hydrogen, 3, 2, 3 and 2. After then you will count the chain. If you will count the chain,
then the counting will be longest possible chain 1, 2, 3, 4 and 5. You can take 1, 2, 3, 4 and 5 also, any chain. पर्टिकुलर काउंट किया तो आपके पास में ये ले लें हम 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 कार्बन वाली चेन में नंबर 3 पे एक इथाइल आ रहा है, नंबर 3 पे एक मिथाइल आ रहा है. अल्फाबेटिकली इथाइल ई मोर प्रायर है, मिथाइल एम लेस प्रायर है, तो आप इसको कहेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल. दिस इज द 3 इथाइल, this is the 3 methyl, and here is the 5 carbon in the chain, so you will call it about this the pentane. So the name of compound is in front of you or the screen as a nomenclature of alkane. See the video properly because of this is too important. Without doing this kind of the just video, seeing the video you can't do, and paper pen is required. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन शुक्रिया, धन्यवाद. आप लोगों का यूं ही प्यार मिलता रहे, यूं सब्सक्रिप्शन चलता रहे, नो डाउट विल जस्ट सक्सेसफुल. खास बात, आप इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो हमारी पहुंच से दूर है. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद. थैंक यू. विजय कुमार सोनी आपका हमेशा आपके साथ रहेगा. धन्यवाद.